Great. So we're live on Facebook as well. So everyone, welcome to the webinar. We'll be discussing winning strategies for Pakistani sellers to win globally on marketplaces. So officially, I'll begin. So winning strategies for Pakistani sellers to win globally is what we will be discussing. We have a very dynamic guest with us to discuss this all with. We all know that the marketplaces are a great opportunity that we must tap. However, we still see Pakistani sellers struggling to win and make it big. Today, we will try to understand why that happens and what strategies can they use to win on these markets. Now to introduce my very, very dynamic guest, we have Shah Talha Suhail with us. He is the co-founder and chief operating officer of TradeMore. Just a little bit of an introduction with him. He's an entrepreneur with a knack for bringing ideas to life. Shah Talha Suhail is the co-founder and chief operating officer of TradeMore, which is on a mission to empower SMEs to sell online. TradeMore works as a channel partner providing sales and after-sales services to help businesses achieve long-term growth on Alibaba.com. Shah Talha has a strong background in digital media and advertising and has managed to build an A team at TradeMore. Under his leadership, TradeMore has won several awards and has recently achieved the milestone of top channel partner for Alibaba.com in a short period of only 5 years. His passion for mechanical engineering and automotive design, coupled with a rich entrepreneurial spirit, compelled him to start Mode Mobility, an engineering and design startup focusing on developing sustainable mobility solutions with two other co-founders who share this particular passion. He has previously headed operations at Icon 7 and Pro Pakistani. Welcome to the webinar, Shah Talha. Thank you for having me. Great. So with such a dynamic, portfolio की mechanical engineering भी है, automotive design के अंदर भी interest है, advertising and digital media में भी interest है. So Talha, we would love to hear more from you. If you can tell us a little bit about yourself and a little bit about your journey as well, from where you started, where you are right now, what was the motivation behind starting TradeMore, and how is it helping Pakistani sellers? ठीक है. Let me first share my screen as well. Sure. And with this PPT, we can tell आपका काफी strong design background भी है. I just have passion for design. So first of all, thank you for having me. To begin with, I just want to make things happen. My curiosity lies within making ideas happen. Whenever we founders come up with any idea, I'm usually the person who gets most excited about making it happen. So in my experience, I've been building things from scratch mostly. जितने भी ventures का मैं part रहा हूँ, वो हमने बिल्कुल zero से start किए हैं. And alhamdulillah, we have been very lucky कि सारे कहीं ना कहीं आज पहुंच गए. So once the things have kicked off, the other thing that I really focus on is building the A team, as you mentioned. I really believe कि अगर आपको कुछ भी achieve करना है, you cannot achieve it without the right team. When I say the right team, I mean that talented individuals, but individuals who have high character. And who can work in a team. That's really important. So उसके बाद जब मैं वेंचर शुरू करता हूँ तो उसके बाद मेरी जो एक significant effort होती है वो होती है टीम बिल्डिंग में. And it's always first who then what. So I look for people irrespective of their background, their professional background or their education background. I just look for talent, people who can work together and put together the right team. एक दफा वो चीजें हो जाएं, so जिस भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हो वो whenever there is growth, I just enjoy that. And हमारे सारे ventures, जिन ventures में part हूँ, we just want them to grow beyond our existence. So ये छोटा सा मेरा introduction था in terms of what I've been doing. Apart from that, I've been part of multiple industries. I've recently co-founded an electric mobility company by the name of Mode Mobility with the vision to induce homegrown EV products. Apart from that, I'm also part of e-commerce industry doing TradeMore. इसके अलावा I've been also part of advertising and publication industry through Pro Pakistani. And one fun fact about me, I really love design. चाहे वो design, चाहे वो user experience design हो, चाहे वो product design हो, चाहे वो graphic design हो, चाहे वो एक अच्छी branding हुई भी हो. I really believe कि whatever you do, you need to design it well. चाहे वो आप interior design कर रहे हो या building design कर रहे हो, road design कर रहे हो, कुछ भी design कर रहे हो. And I think as a community in Pakistan, we really lack design. तो उस पे एक मेरा बहुत focus होता है. And once you design things well, it becomes easier for everyone. चाहे वो experience design हो, product design हो. So that's something about
myself. अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडमोर के हवाले से बताता चलूँ, तो ट्रेडमोर में when we started ट्रेडमोर in 2017, when Alibaba approached us, basically our vision was to empower SMEs to sell online. क्योंकि 2017 में हमने रियलाइज कर लिया था कि अभी भी हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बहुत ओल्ड स्कूल मेथड से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो या वो एक्सपो के थ्रू फिजिकली एक्सपोज में जाते हैं या फिर वो किसी एजेंट्स के थ्रू करते हैं, एंड वो लोग जो सारे हैं वो लोग अभी भी ऑनलाइन मीडियम से अवेयर नहीं है. सो जब हमें ये अलीबाबा वाली अपॉर्चुनिटी मिली, सो एक हम लोग ने ये सोचा कि दिस इज एग्जैक्टली इन लाइन विद द विजन, और इसमें हमारा मिशन यही होना चाहिए कि हम एसएमईज को जितना ज़्यादा ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के बारे में सिखा सकें वो सिखाएं. सो उसके बाद दैट्स वेयर वी स्टार्टेड ट्रेडमोर विद द विजन टू help SMEs grow. That's why the name is TradeMore. We help them trade more. And our expertise obviously doesn't lie in any specific e-commerce domain, but we are experts in sales and after sales. So हम लोग different companies के साथ partner up करते हैं, जैसे हमने Alibaba.com के साथ partner किया. We are also Payoneer partner by the way, and we are also Firstbase partner. Firstbase is an entity जो US में पाकिस्तानी sellers को entity register करने में help करती है. So हमारी एक्सपर्टीज जो होती हैं वो सेल्स और आफ्टर सेल्स में होती हैं, एंड वी पार्टनर अप विद कंपनीज जो कि डायरेक्टली हमारे एसएमईज को हेल्प कर सकती हैं, एंड वी हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस, वी हेल्प SMEs grow their business, so it's a win-win for everyone, and at the end of the day our business grow as well. So with that vision, we also recently started School of Growth. School of Growth में हमारा टोटल जो मिशन है वो यही है कि जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे ट्रेडर्स, हमारे सेलर्स के लिए, वो हम उनको एक अंडर वन अम्ब्रेला सिखाएं. इसमें टोटल जो हमारा विजन है वो यही है कि जो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं हम उनको एम्पावर करें, और उनको एम्पावर करें ताकि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रेड करें. उससे इवेंचुअली सबका फायदा होता है, डॉलर रेवेन्यू आता है, जीडीपी बढ़ता है, जॉब क्रिएशन बढ़ती है, हमारे मुल्क की रेपुटेशन बढ़ती है. सो एक पूरा साइकिल है जो इससे एसोसिएटेड है. सो दैट्स आवर विजन विद स्कूल ऑफ ग्रोथ. अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन के हवाले से बताऊं, वी स्टार्टेड TradeMore in early 2017. We were just 2 members who founded it. हमें तकरीबन 2 साल लगे ये चीज़ समझने में कि what is the right way to do these operations, जिसको आप पायलट ऑपरेशंस कह लें. उन 2 साल में हमने ये रियलाइज़ किया कि इवन दो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनकी सारी नॉलेज पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं दे स्टिल प्रेफर कि समवन सिट्स विद देम एंड ट्रेन देम. सो हम लोग वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड वेरी क्विकली वी रियलाइज्ड कि इस्लामाबाद में सेलर बेस इतनी ज़्यादा है नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमें वी हैड टू एक्सपैंड एल्सवेयर. सो इट टुक अस 2 years to finalize the model, understand what is the right way to onboard sellers. So 2019 में we opened our office in SME considered cities, that is Sialkot and Karachi. And then we were able to onboard more than 150 sellers on Alibaba.com. वो हमारे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, हमारे लिए बड़ी अच्छी हमें ग्रोथ मिली. हमें अलीबाबा की तरफ से 3 से 4 अवार्ड्स भी मिले मार्केट एक्सपेंशन के. सो वहाँ से हमने चीज़ें पिकअप करना शुरू कर दी. लेकिन जो 2020 साल था वो बहुत ही क्रेजी ग्रोथ थी हमारे लिए, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली. आई रिमेंबर कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ है तो आवर सेल्स ड्रॉप टू 0 इन अप्रैल एंड मई, बट इन जून we did more than 50, we onboarded more than 50 sellers, और उससे पहले हमने किसी भी एक महीने में 50 sellers नहीं किए थे. सो वो एक पॉइंट था जहाँ पे आई थिंक हमारे जो sellers थे उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि अब ग्लोबल पेंडेमिक आ गया है और ये चीज़ें अब यहीं रहनी है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम ओल्ड स्कूल मीडियम्स पे नहीं रियलाइज कर सकते, तो लेट्स व्हाई नॉट एक्सप्लोर दीज ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस. सो आई थिंक वो हमारे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग ने अपनी सेलर बेस 150 से 500-600 सेलर बेस अपनी कर ली थी, जो SMEs की है. वी ऑल्सो वॉन एन अवार्ड फ्रॉम Alibaba.com, जो में एक्सलेंट चैनल पार्टनर अवार्ड मिला. इसके अलावा हम वी वर द ओनली पाकिस्तानी चैनल पार्टनर सिलेक्टेड टू सर्व US SMEs. हम लोग यहाँ से जो US एक्सपोर्टर्स हैं हम उनको भी सर्विस देते हैं. इसके अलावा इवन 20 एंड सिंस देन हमारी ग्रोथ हैव बीन रियली एक्सपोनेंशियल. हमें रिसेंटली इस साल भी Q1 में टॉप परफॉर्मिंग चैनल पार्टनर का अवार्ड मिला है, और इसके अलावा हमें USAID की तरफ से एक ग्रांट भी मिला है अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने का. इस ग्रांट का टोटल मकसद ये है कि हम जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं हम उनको एम्पावर करें, और एम्पावर करने के लिए हम लोग 6 और ऑफिसेज बना रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें वजीराबाद, फैसलाबाद ओपन हो गए हैं, मुल्तान, लाहौर, टेक्सला और पेशावर अगले 4 से 5 महीने में ओपन होंगे. सो दिस इज ब्रीफली अबाउट ट्रेडमोर and myself.
That was brief but very impressive, and I think you covered it all, Sara, बहुत अच्छे तरीके से. And it's great that Trademore is doing such amazing work, and they're being recognized for that as well. So definitely they are doing the right thing. A small question that I had कि हमारी audience के अंदर क्योंकि काफी mix होता है. So when you say sales and after sales, and you also mentioned कि पाकिस्तानी sellers को पसंद है कि कोई उनके साथ बैठ के उनको train करे. If you can just expand a little bit on it कि ये training की जब हम बात करते हैं तो वो किस चीज के ऊपर training हो रही होती है, and when you specifically mention sales and after sales, what all is included in that? जी, सो इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उनकी एक मेंबरशिप फीस होती है या उनके डिफरेंट मॉडल होता है, हम आगे कवर करते हैं. सो हम सबसे पहले करते ये हैं कि जो एक ऑनबोर्डिंग फीस होती है हम उसकी सेल्स करते हैं. हम अलीबाबा के लिए जो उनकी एनुअल मेंबरशिप होती है हम उसकी सेल्स करते हैं, और वो बेसिकली एक एसएमई के लिए एक ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है. एक दफा जब वो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हो जाता है, वंस दे हैव पेड द फीस एंड दे हैव ऑफिशियली ओपनड अ स्टोर ऑन द मार्केट प्लेस, तो उसके बाद उनको एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है टू ऑपरेट सक्सेसफुली ऑन द प्लेटफॉर्म. और वो जो ट्रेनिंग होती है वो एक बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें होता ये है कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपनी मिनी साइट बनाते हैं. इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में रिक्वायर्ड होती हैं. आप वो सारा सेटअप करते हैं. उस सेटअप में और अपनी बिजनेस वेरिफिकेशन पास करते हैं. बिजनेस वेरिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो वंस यू हैव पास द बिजनेस वेरिफिकेशन, यू हैव सेट अप योर अकाउंट, तो उसके बाद नाउ यू वांट कस्टमर्स टू कम इन. तो कस्टमर्स के लिए भी आपको यू हैव टू पुट इन सिग्निफिकेंट एफर्ट. आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत से मेजर्स देने पड़ते हैं. सो वो जो एक पूरी एफर्ट होती है पूरे साल, सो हम उसकी जो सारी ट्रेनिंग है वो देते हैं. सो ये हमारी आफ्टर सेल्स में आती है. और ऑब्वियसली अगर वो कस्टमर सक्सेसफुल होगा तो ही वो अगले साल मेंबरशिप रिन्यू कराएगा. सो ये पूरा जो एक 12 मंथ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये हम इंश्योर करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली सेल्स एंड आफ्टर सेल्स. Okay, great. I think that explains it. और जो थोड़ी बहुत clarity I think सबके दिमाग में चाहिए थी. So we're pretty clear on what the services are. My next question is, because you're dealing with so many Pakistani sellers, so this is why I want to ask you, कि compared to the international standards, how would you rate Pakistani sellers? What are their positives? What are their negatives? And extra work for improvement कहाँ इनको needed है? ठीक है, I have a slide for this one as well. So I'll first cover the positives. Pakistanis are obviously very good with their craft. आप कहीं भी जाएंगी आप हमेशा ये सुनेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत फेमस हैं. हमारी बनाई हुई चीज़ें आज भी दुनिया में पसंद की जाती हैं, खास तौर पे आर्टिसनल वर्क जो है, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नली भी लोग हमारे आज भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट पसंद करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो हमारी पसंद करते हैं. इसके अलावा वी आर स्टिल वेरी प्राइस कंपेटिटिव. अगर आप देखेंगी कि अगर आप देखेंगे कि चाइना कितना टेक्नोलॉजी में एडवांस कर गया है, और वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का हमें नेचुरली नुकसान तो होता है, बट वी आर स्टिल वेरी प्राइस कम्पिटिटिव. हमारी लेबर कॉस्ट कम है, हमारी लिविंग कॉस्ट कम है. सो वी हैव एन एज व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल सेलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू अ फ्यू सेगमेंट्स. हम लोग टेक्सटाइल में बहुत फेमस हैं, हम स्पोर्ट्स गुड्स में बहुत फेमस हैं, हम सर्जिकल गुड्स में बहुत फेमस हैं, लेदर में बहुत फेमस हैं. इस तरह की और कुछ नई इमर्जिंग कैटेगरीज भी हैं, वो मैं आगे कवर करूंगा. सो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमारी रेपुटेशन पाकिस्तानी सेलर्स की, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स की अच्छी है. So that's a positive. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीसेंट ट्रेंड आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, वो ये है कि अब बहुत सी अवेयरनेस हो गई है रिगार्डिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, फ्रीलांसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस. सो उसकी नॉलेज अब बहुत इजीली अवेलेबल है. सो मैं हमेशा हर किसी को ये कहता हूँ कि यार अगर अब आपके पास इंटरनेट एक्सेस है और एक स्मार्टफोन है और आप नहीं सीख रहे तो इट्स ऑन यू, क्योंकि आपको सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. सो एक आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव. दुनिया में नॉलेज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, एंड इट कम्स एट अ सर्टेन प्राइस. तो एक वो हमें जो अपॉर्चुनिटी है लोगों की सीखने के लिए और एक्सेस टू नॉलेज जो है वो बहुत आसान है, खासतौर पर इट कम्स टू ऑनलाइन सेलिंग, अमेजॉन, अलीबाबा एक्सेट्रा. इसके अलावा ये थैंक्स टू पेयोनियर, वी बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज आर ओपनिंग अप फॉर पाकिस्तान. हमें अभी भी बहुत इशू होता है पेमेंट गेटवेज का, तो उसमें पेयोनियर और इस तरह के जो और अब पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, पेमेंट फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये हमारे सेलर्स के लिए बहुत आसानी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विड्रॉइंग देयर मनी, अपने जो भी उन्होंने सेल किया उसके पैसे लेने के लिए. अगर हम नेगेटिव्स में आए, सो इवन दो कि नॉलेज बहुत इजीली एक्सेसिबल है, पीपल आर स्टिल नॉट रियली अवेयर ऑफ हाउ दीज प्लेटफॉर्म works. Or that's also because they lack trust in online marketplaces. So they don't have the confidence to directly approach these platforms and sign up.
दे वांट समवन टू एक्चुअली वाउच फॉर इट। ये एक थोड़ा सा चीज है पाकिस्तानी सेलर्स में अभी भी। सेकेंडली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे स्टार्ट विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। मैं हर किसी को एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि ऑन गेटिंग योरसेल्फ ऑन बोर्डेड ऑन अ मार्केट प्लेस इज लाइक बेसिकली बाइंग अ मेंबरशिप फॉर अ जिम। आपने महीने के पैसे तो दे दिए उसे जिम को एक्सेस करने के, लेकिन अगर आप जाएंगे नहीं, आप सही डाइट नहीं लेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपके मसल्स नहीं बिल्ड होंगे। सो आप फिर बाद में आप जिम को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो जिम को पैसे दिए थे। सो इसलिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जब भी कोई सेलर ऑन बोर्ड होता है तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं। हम सेल करने से पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं ताकि उसको पता हो कि वो जब आ रहा है तो वो उसको सिर्फ पैसे नहीं देने, उसको एक बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट करनी है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं एक्सपेक्टेशंस के अराउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस स्टैंडर्ड हमारे अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। देखिए हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जो इंटरनेशनल बायर है दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन सर्विस लेवल। वो चार्ज बैक्स करते हैं, वो एक बहुत से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं सर्विस डिलीवरी के जिससे वो यूज्ड टू होते हैं। जब वो पाकिस्तानी सेलर्स के बात करते हैं, वो ना फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पलिंग करने को तैयार हैं, ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिस्टिक्स करने को तैयार हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हमारे सेलर्स ऑफर नहीं करते। और जब हमारे सेलर्स ऑफर नहीं करते तो वो ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक होता है। वो और बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, श्रीलंका से कंपेयर करते हैं, इंडिया से कंपेयर करते हैं। सो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। फिर वैल्यू एडिशन नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम लोग सेलर्स के साथ काम करते हैं, हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं, और जब हम ऑनबोर्ड करके उनको कहते हैं यार आप अपने प्रोडक्ट्स की हमें तस्वीरें भेजें, हमने आपके स्टोर फ्रंट पे लगानी है, तो वो ये कहते हैं कि यार हम तो टेक्सटाइल बेचते हैं, आप कोई भी टेक्सटाइल की तस्वीरें लगा दें। अब हम उनको पहले तो ये समझाते हैं कि देखिए आपका पेटेंट एग्रीमेंट होगा, आप अलीबाबा का या अमेजोन का जो भी है सॉफ्टवेयर है वो पिक कर लेगा कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कहीं अपलोडेड है, पिक्चर कहीं ऑलरेडी अपलोडेड है। सो उसका वो कोई जुगाड़ तो ढूंढ लेते हैं, वो वाटर मार्क कर लेते हैं, वो स्लाइड कुछ एडिट कर लेते हैं। बट उससे होता ये है कि जब कोई बायर आता है प्लेटफॉर्म पे और वो जाके 4 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस देखता है और वो ये देखता है कि यार एक ही तस्वीर है, वो 4 डिफरेंट कंपनीज के नाम पे लगी हुई है, सो उससे आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बिल्कुल लूज हो जाती है। आपने अपना कोई यूनिक ब्रांड नहीं आइडेंटिफाई किया, आप बेच तो रहे हैं अपीयरल या आप बेच तो रहे हैं टेक्सटाइल, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं की, कोई आप डिफरेंट डिजाइन करते हैं, वो हमारी थिंकिंग उस तरह की नहीं है। सो उससे उससे होता यह है कि उससे जो आपका माइंडसेट है वो यही है कि भाई हमें ऑर्डर मिलेगा, हम जो भी वो ऑर्डर देंगे हम एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर देंगे। बट वो बायर को, इंटरनेशनल बायर को अट्रैक्ट नहीं करता वो माइंडसेट, एक्सेप्ट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यू कस्टमर एक्विजिशन। जिनके जिनके बायर्स ऑलरेडी हैं वो लोग तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट अगर कोई नए लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दे रियली नीड टू थिंक यार व्हाट इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप डोमेन चेंज करें, आप रहें टेक्सटाइल में, आप रहें अपैरल में, आप रहें इस तरह के और चीजें जो पाकिस्तान अच्छा बनाता है, जिसकी क्राफ्टमैनशिप अच्छी हो रही है, जिसकी चीजें इजीली अवेलेबल है, लेकिन स्टिल हैव सम यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसके अलावा ये कि इवन दो पेयोनियर आगे और भी आ रहे हैं, बट अभी भी हमारे जो सेलर्स हैं उनको थोड़ा सा पेमेंट गेटवेज में इशू होते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि यार हमारे लिए ये कन्वीनियंट है, हम यूएस में ये यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे इस बैंक में पड़े हैं, आप इससे ले लो। सो थोड़े बहुत उस तरह के इश्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्टली एक जो बहुत बड़ा इशू है वो बायर सिक्योरिटी का है। जिस तरह अलीबाबा पे एक फीचर है ट्रेड एश्योरेंस के नाम से, विच एसेंशियली वर्क्स एज एस्क्रो मॉडल, कि जो मार्केट प्लेस है वो आपके पैसे होल्ड करता है। तो उससे होता ये है कि अगर बायर ने मार्केट प्लेस के थ्रू कोई चीज ऑर्डर किया सेलर को, तो वो बायर की सिक्योरिटी ये है कि अगर सेलर डिलीवर नहीं करेगा तो बायर कम से कम क्लेम कर सकता है। पाकिस्तानी सेलर्स को डिसएडवांटेज ये है कि कोई प्लेटफॉर्म एस्क्रो मॉडल नहीं ऑफर कर रहा व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। अलीबाबा भी नहीं ऑफर कर रहा, अमेजोन में भी नहीं है। सो वो इस तरह की चीजें फिर थोड़ा सा एक हमें डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। Great. Just on the previous part, I had two questions. So when we talk about कि वो service standards जो हैं, they're not up to the mark of the international, what the international buyer is used to. उसके अंदर एक तो होगी कि free sampling वगैरह, but if you can highlight a few more examples when we talk about कि service standards are not up to the mark, what exactly are we referring to? And उसकी क्या reason है कि वो नहीं करते हैं? अब देखिए, सो फॉर एग्जांपल सर्विस लेवल में सबसे पहले आता है रिस्पांस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पांस टाइम। अगर आपने अपने बायर को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसको सबसे पहले ये मैसेज जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। और ऑब्वियसली उसमें टाइम जोन डिफरेंस भी आता है, वो रात को उठे हुए हैं, आप रात में सो रहे हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बट यू नीड टू बी रियली प्रोएक्टिव। सो रिस्पॉन्स टाइम ऑब्वियसली, एंड देन रिस्पॉन्स रेट। These things are very important, and then the way you collaborate with them. अगर कोई mess up हो गया, so you should be willing to offer things free of cost. आप ये ना कहो भाई मेरी कॉस्ट तो आ गई, आपने बायर बनाना है, आपने लॉन्ग टर्म अपना बायर बनाना है। सो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि ना जो सर्विस लेवल पे हम नहीं होते। अगर आपका बायर किसी भी चीज पे अपसेट है, आप उसको कंपनसेट करो,
यू डोंट आप मुल्क भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उस बायर को उस ऑर्डर की वैल्यू ना देखो, आप ये देखो कि यार लॉन्ग टर्म में हम इस बायर को से कितना अर्न कर सकते हैं और हम जॉब क्रिएशन कितनी कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। सो हर प्लेटफॉर्म पे ये वेरी करती हैं चीजें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सर्विस लेवल जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर हम लोग जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो उसमें एक सर्विस जिस जहाँ पर आपको अच्छी मिल रही होती है, you're obviously somehow fond of that restaurant. So इसी तरीके से सर्विस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन दो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब भी हो गया है, इस तरह की भी चीजें हो गई हैं, बट आपने अगर सर्विस लेवल अपना अच्छा रखा हुआ है, आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, आपका जो भी प्रोफेशनलिज्म है आपका बात करने में, ईमेल कम्युनिकेशन में, प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपने कमिट किया है, इसमें इंटेग्रिटी भी आती है। इंटेग्रिटी भी आई थिंक एक बड़ा मेजर इशू है। यू नीड टू डू व्हाट यू से यू विल डू। हमारे यहाँ ये भी इस तरह के भी मसाइल आ जाते हैं। सो स्टफ लाइक दैट बेसिकली। Great. So on the service level, I think I'm more clear on what is required. Another question that I had was, and we observed that as well, but I wanted to understand from your experience कि जो merchandising की बात की है कि एक picture of the internet ही ले लेंगे rather than creating their own or spending a little money on photography and merchandising the product the right way. Any particular reason why you feel people don't invest on it? Is it the lack of understanding कि ये branding बहुत important चीज है merchandising आपको करने की, या वैसे general it's a cultural issue that we have? I think it's the lack of understanding. They just don't understand कि how why branding is important first of all. वो हमेशा इस बात पे कहते हैं कि यार ठीक है बस हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, बट वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि असल मार्जिन तो उनका है ही नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आई थिंक वो हम लोग और आप लोग मिलकर अगर हल करें, वो ये है कि हमें पाकिस्तान से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को हिट करना है, और डायरेक्ट कंज्यूमर को हिट करने के लिए यू नीड टू ब्रांड योर प्रोडक्ट राइट। हमारा अभी भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट अभी भी सिर्फ मैन्युफैक्चरर का है। हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर्स को हिट नहीं करते, और होगा ये फ्यूचर में कि चाइना भी अपनी इंडस्ट्रीज तो सारी यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, लेकिन हम एक दिन से फैक्ट्री वर्कर रह जाएंगे। सो जो आपकी जो बात है ना, वो इशू सारा यही है कि हम लोग की वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो कल्चरल इशू भी है कि कोई एक एफर्ट नहीं कर रहा, और जो एक कर रहा है वो कुछ ब्रांड्स बने हैं, हमने सियालकोट में देखे हैं जो इतने अमेजिंग ब्रांड्स बन गए हैं, जो डायरेक्ट मतलब एक मुझे याद है एक हॉकी का ब्रांड है अल्लाह दिता, उन्होंने अब अल्लाह हटा दिया और दिस जस्ट दिता, एंड दैट्स अ वर्ल्ड फेमस ब्रांड फॉर हॉकी नाउ। सो देयर आर एग्जांपल्स लाइक दैट, बट देयर आर ओनली फ्यू। जितनी अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें पाकिस्तान में जितनी हो रही है, वो उसका हम फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम डायरेक्टली वो हिट नहीं कर पा रहे। सो ये जो हम जो काम कर रहे हैं ना, हम लोग बेसिकली ये काम कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम प्लेटफॉर्म तो नहीं रन कर रहे। हम लोग प्लेटफॉर्म तो पूरा अलीबाबा रन कर रहा है या अमेजोन रन कर रहा है या सारे प्लेटफॉर्म्स है। हमारा जो मेजर फोकस है वो सेलर्स को ये चीज़ों पे एम्फेसाइज करना और उनको फोर्स करना कि यार ये चीज़ आप करें, आप थोड़ा सा आपको स्पेंड करना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ब्रांडिंग के लिए, आपको कुछ ना कुछ अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है जो आपने बेयर करनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बाद में जितना भी प्लेटफॉर्म को ब्लेम करें, आप नहीं सक्सेसफुल होंगे। तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई थिंक देयर इज सम ट्रेंड। अच्छा, मुझे एक चीज, वन लास्ट थिंग, हो ये भी रहा है कि शहरों में, बड़े शहरों में तो इसका बहुत ट्रेंड है ब्रांडिंग, गुड डिजाइन, बट जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, जहां पे ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, वहां पे कम है। सो हमारा ट्रेडमोर का फोकस यही है कि हम उन शहरों में अपने ऑफिस बना के उस जगहों पे ये चीजों पे हमारे मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेन करें। Great. I think that answers it. The next question that I had for you was, what are the global e-commerce trends and where do you see the opportunity for Pakistani sellers? ठीक है। So सबसे पहले तो I think all of us know कि COVID-19 has changed the world, especially for the e-commerce industry. E-commerce is the only industry which thrived in this era. जो लोग पहले नहीं करते थे वो अब फोर्सफुली पेमेंट गेटवेज यूज करते हैं, वो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करते हैं, वो लोग अब ई-कॉमर्स यूज करते हैं जो नहीं। तो सबसे ज्यादा एक इंडस्ट्री को जिसको फायदा हुआ वो ई-कॉमर्स को हुआ। सो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी सेलर्स के लिए भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा ये कि जो हमने कोई जो जस्ट टू गिव यू सम फैक्ट्स, ओवर 2 बिलियन पीपल परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन 2020। मतलब अगर आप 7.5 बिलियन टोटल आवाम है, सो मोर देन 20% ट्रांजेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंटरनेशनली अब चेंज हो रही हैं, ग्लोबली भी इस तरह की चीज़ें बहुत फेमस होती जा रही हैं अब, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह। इसके अलावा B2B ई कॉमर्स जो था वो पहले इतना पॉपुलर नहीं था। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंटरनेशनली एंड लोकली एज वेल। अगर आप देखेंगे अब छोटे किराना स्टोर वाले भी जो है ना अब ऑनलाइन एप्स यूज कर रहे हैं अपनी सेल परचेज के लिए। बायर्स सेलर्स कनेक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के हो रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं वो
लोकल B2B के लिए भी शुरू हो गए और ग्लोबल B2B तो इंक्रीज हो ही गई है। इसके अलावा जो एक इंटरनेशनल ट्रेंड आजकल बहुत आ रहा है, पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग ऑफिसेज एनीमोर, सो वर्चुअल कंपनीज बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी को बहुत हेल्प होगी। जिस तरह मैंने देखा था कि हमारे पास फ्रीलांस कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है आज जो हमारी ऑडियंस में। सो उसमें आई थिंक जो एक बहुत की फ़ायदा हमें है वो यही है कि क्योंकि अब कोई यहाँ का डेवलपर अमेजोन के लिए भी काम कर सकता है, पाकिस्तान में बैठ के गूगल के लिए काम कर सकता है, और भी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं जिनके लिए काम कर सकते हैं। सो वर्चुअल कंपनीज बन रहे हैं, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस आर हियर। इसके अलावा ये मोबाइल कॉमर्स जो है वो बहुत फेमस हो रहा है। हम लोग पहले जब वेबसाइट डेवलपमेंट करते थे तो वो कंप्यूटर के लिए वेबसाइट बनती थी और वो उसका एक मोबाइल वर्जन एक अडेप्शन बनती थी। अब इट्स द अदर वे राउंड, अब मोबाइल फोन के लिए चीज़ें डिज़ाइन होती हैं और उनका एक कंप्यूटर का वर्जन एक अडेप्शन बनती है। इसके अलावा सेल्फ सर्विस इज ऑल्सो बिकमिंग रियली कॉमन। अब जो है पीपल डोंट प्रेफर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, तो सारी चीज़ें इवन अब फिजिकल स्टोर्स में, ऑनलाइन स्टोर्स में, हर जगह द डिज़ाइन इज एज सच दैट यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद एनी ह्यूमन। अगर हम पाकिस्तानी सेलर्स के लिए बात करें, सो पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट ग्रू बाय 35% इन Q1 ऑफ 2020 और ओवरऑल जो है हमने लास्ट ईयर में 90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव की है। दैट मींस समथिंग, that means a lot for Pakistani sellers, and this can give you an idea, and the audience this basically can give them an idea कि भाई कितनी बड़ी मार्केट ये बनती चली जा रही है जो ई कॉमर्स है। हमारी आबादी अभी भी 20 से 25 करोड़ है, सो इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड नए ऑप्शंस ओपन अप हो रहे हैं। So it's a perfect time to basically verge into the e-commerce industry. Apart from that, I strongly believe that success stories already exist. इसमें हमें we just need to learn from them. We just need to see the best practices from them, and the people who are successful on the platform need to come out and share with others as well. एक चीज हमें feel होती है कि हम बहुत से sellers को जानते हैं जो बहुत successful हैं, but they're not willing to share it with the audience. So I think it's you know, we all have to see the greater good, and we need to teach each other about these things. And apart from that, as I said, नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल है, सो ये पाकिस्तानी सेलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की जो वर्किंग नॉलेज है वो बहुत इजी एक्सेस है उसका उनके, तो वो जाके आसानी से सीख सकते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से सीखना चाहें। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे पास अमेजोन, अलीबाबा सिखाने वाले बहुत इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, सो कोई एक गैप नहीं है मार्केट में अभी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल नो दैट रिसेंटली अमेजोन अलाउड पाकिस्तानी सेलर्स टू ऑफिशियली लिस्ट देम, so that's something really big for Pakistani sellers. Great. So I do feel the opportunity here, and we have proven with the year-on-year growth rate, if we see. So the opportunity is there, and people are making use of that opportunity as well. Talha, initially you mentioned you've been working as a channel partner with Alibaba, and there are a lot of awards that you've been running, you've been winning as well. Yeah. So will be great अगर आप पाकिस्तानी sellers का opportunity size Alibaba के हिसाब से बता दें कि where do you see Pakistani sellers opportunity for Alibaba specifically, since that's a huge marketplace on its own as well? ठीक है। So I have a few stats regarding Alibaba.com. सबसे पहले तो ये कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं अलीबाबा को लेके, हमें भी इस तरह की बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि आप अलीबाबा से चीज़ें मंगवा देंगे या आप ये कर देंगे। सो ये अली एक्सप्रेस क्या है और क्या है। सो अलीबाबा के बहुत डिफरेंट मॉडल्स हैं, इट्स अ ह्यूज कंपनी, बट जो पाकिस्तानी सेलर्स के लिए जिससे लिंक है दैट्स जस्ट Alibaba.com. Alibaba.com का एक ही मिशन है टू बेसिकली कनेक्ट SMEs अराउंड द वर्ल्ड। उनका मकसद ये है कि ब्राज़ील का एक सेलर पाकिस्तान में बेच रहा हो, पाकिस्तान का एक सेलर US में बेच रहा हो, US का एक सेलर श्रीलंका में बेच रहा हो, सो कनेक्टिंग SMEs अराउंड द वर्ल्ड, नॉट बिग कंपनीज बट स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट्स देयर विजन। जो Alibaba.com एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे 190 प्लस कंट्रीज की प्रेजेंस है, मतलब बायर्स जो हैं वो तकरीबन 190 प्लस कंट्रीज से हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव 18 मिलियन प्लस एक्टिव बायर्स और 40 प्लस कैटेगरीज ग्लोबली जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं। 40 प्लस कैटेगरीज मतलब टेक्सटाइल एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है, इस तरह की 40 से ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो टोटल अलीबाबा पे ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा ये कि तकरीबन बायर्स को ये टोटल जो इंक्वायरीज जनरेट होती हैं प्लेटफॉर्म पे वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा है। अब अगर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें कि पाकिस्तान के क्या स्टैट्स हैं अलीबाबा को लेके, सो अभी करंटली 3000 से ज़्यादा सप्लायर्स पाकिस्तान से अलीबाबा पे ऑपरेट कर रहे हैं सक्सेसफुली, और 64% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अचीव कर रहे हैं। जो चार पांच कैटेगरीज पाकिस्तान पेविलियन में आती हैं और पाकिस्तानी सेलर्स सबसे ज़्यादा इंगेज होते हैं स्टैट्स के मुताबिक, वो हैं टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल गुड्स, लेदर। इसके अलावा ये कि कुछ इमर्जिंग कैटेगरीज हैं जिनमें सॉल्ट है,
सॉल्ट ने पिछले 2-3 साल में हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये जो सारी हब सॉल्ट है, ये सारी जो सॉल्ट्स हैं हमारी, ये सारी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, बट प्राइमरीली ये 4-5 कैटेगरीज़ हैं जिनमें सर्जिकल गुड्स में हमारे ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं। सो प्राइमरीली अगर आप इन डोमेन्स से हैं, सो यू हैव अ हाई चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ग्लोबली जितने सेलर्स alibaba.com पे हैं, उनमें से 13% जो है वो पाकिस्तान में से है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर अलीबाबा पे इतना ट्रेड हो रहा है, सो उसमें 13% पाकिस्तानियों का भी कंट्रीब्यूशन है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी भी दिखाना चाहूँगा, जस्ट टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल आर बीइंग सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म। एक हमारे क्लाइंट हैं यूनिक जिम वेयर, ये प्राइमरीली तो अपैरल, स्पोर्ट्स वेयर और फिटनेस वेयर में डील करते थे, बट इनका जो एक ट्रांजिशन पॉइंट आया वो कोविड-19 में आया, क्योंकि ये फिटनेस वेयर में थे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाते थे, तो इन्होंने कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए कोविड रिलेटेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया। तो इनकी जो प्री कोविड सेल्स थी थ्रू द प्लेटफॉर्म वो अराउंड $20,000 थी, और पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड इन्होंने $4 लाख से ज्यादा की सेल की है एनुअली ऑन द प्लेटफॉर्म। सो दैट यू नो that gives you an idea of the impact that people can create through this platform. Lekin a few things about their accounts. They were a 3-star supplier. They had more than 4 years of platform experience. Their response time was less than 1 hour. And their response rate was 100%. So ये चीजें हम अपने सारे suppliers को बताते हैं, और इनकी भी आपको एग्जांपल है कि ये 4 साल से प्लेटफॉर्म पे हैं. They have been putting in significant amount of effort. Nothing is overnight. मतलब एक रात में नहीं हो जाता. So this is just to give you an idea. इसमें जो हमारा रोल है वो ये होता है कि हम सारे सेलर्स को भी सिंस वी आर द प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स, वी हैव कंप्लीट कमांड ऑन द प्लेटफॉर्म, हम उन्हें कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं ऑन हाउ टू ऑपरेट ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके डूज एंड डोंट्स फ्रॉम ए टू जी कंप्लीट गाइडेंस हम उनको alibaba.com पे ऑपरेट करने के लिए देते हैं। इसके अलावा ये कि हम लोग न्यू मार्केट ट्रेंड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं और कंपटीशन भी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान से आके हमसे पूछेंगे कि यार मैं चावल बेच सकता हूँ alibaba पे, तो हम एक थोड़ा सा रिसर्च करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमें काफी हद तक खुद पता होता है, बट अगर कोई नई कैटेगरी आए सो वी डू सम रिसर्च अगेन, और फिर हम बिफोर ऑनबोर्डिंग देम हम अपने सेलर्स को बताते हैं कि यार इसकी ट्रैक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी और इसकी नहीं मिलेगी। So we basically uprise them with the new market trends and competition. And apart from that, I keep saying this, and मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि alibaba.com and other marketplaces as well, they're really competitive. अगर आप वहाँ पे आके उस कंपटीशन को रियलाइज करके उसमें एफर्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं सक्सेसफुल होंगे। सो व्हेन देयर इज कंपटीशन यू नीड टू एडवर्टाइज। सो alibaba.com के ऊपर कीवर्ड एडवर्टाइजिंग होती है, पीपीसी Amazon के ऊपर होती है, सो यू हैव टू डू कीवर्ड एडवर्टाइजिंग एज वेल एंड इंक्रीज योर विजिबिलिटी। सो ये जो कैंपेन्स डेवलप होती हैं प्लेटफॉर्म के लिए, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग की, प्रोडक्ट पोस्टिंग, लिस्टिंग, सारी चीजें, मिनी साइट बनाना, ये सारा काम भी हम सप्लायर्स को करके देते हैं। Great. I think you've given a great overview with Alibaba and the opportunity there. And I think the key takeaway for me would be कि you said कि all these marketplaces are very competitive. And वो जो पहले आप बात करते थे wrong expectations वाली, we need to keep this in mind that if you're going into a competitive market, the opportunity is a lot, but then also the work behind it has to match that. बिल्कुल तो बिल्कुल बगैर कोई काम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉरी, नहीं go ahead, sorry. तो मैं ये कहता, क्योंकि लोग कल को आके ना फिर प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते हैं। होता ये है कि ब्लेम करने वाले 4 होते हैं और वो सबको बता रहे होते हैं कि प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं, और जो सक्सेसफुल होता है वो चुप बैठा होता है। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन सेटिंग पे बहुत काम करते हैं। Yes, no, absolutely. We usually just look at the, a glossy picture and not the hard work behind it. So I think हम लोग का है that we need to change ourselves and we need to change how we think about it. अच्छा, Alibaba का तो I think we're pretty clear on how it works and what's the opportunity. How do you compare the different platforms? So a lot of times, Amazon is considered कि oh, this is the market that you sell on, but बाकी भी हैं, Alibaba है, eBay है. इन 3 मार्केट प्लेसेस को आप एक्चुअली आपस में कंपेयर कैसे करोगे, और फॉर पाकिस्तानी सेलर्स आप किधर प्रेफरेंस दोगे कि एंड हाउ शुड दे बी A, तो which marketplace they should be going for as a preference, and B, how should they be operating and what should be the decision making process for them? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई थिंक सबके लिए समझना, क्योंकि लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, काफी हाइप है अराउंड द फैक्ट कि Amazon पाकिस्तान में आ गया है और चीजें हैं, बट आई फाउंड पीपल स्टिल नॉट क्लियर ऑन दीज थिंग्स। सो आई विल ब्रीफली कवर, एंड मैं थोड़ा आपको बिग पिक्चर कंपैरिजन बता देता हूँ, और हम पाकिस्तानी सेलर्स के हवाले से भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी सेलर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सूटेबल होगा। इसमें अगर हम ब्रॉड लेवल कंपैरिजन देखें, सो
Alibaba.com जो कि एक मार्केट प्लेस है Amazon और eBay के दरमियान। सो Alibaba.com का जो बिजनेस है प्राइमरली वो सिर्फ B2B है, वो सिर्फ बिजनेसेस को बिजनेसेस से कनेक्ट करते हैं। Amazon जो है उनका एक B2B विंग भी है बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। देयर B2C विंग, इट्स व्हाट देयर फेमस फॉर। ऑन द अदर हैंड eBay इज B2C एंड आल्सो C2C। कोई कस्टमर को अपनी एक चीज ऑप्शन करनी है, एक चीज कोई बेचनी है, तो वो भी eBay पे जाता है और बेच देता है। अगर हम मार्केट प्लेसेस कंपेयर करें, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि Alibaba.com is just one marketplace connecting globally buyers and sellers. Amazon on the other hand have 16 marketplaces and eBay have 47 marketplaces. 16 marketplaces का मतलब ये हुआ कि US में जो Amazon.com है वो एक marketplace है, ऑस्ट्रेलिया में जो Amazon.au है वो एक अलग marketplace है, और जर्मनी में जो Amazon.de है वो एक अलग marketplace है, and similarly they have 16 marketplaces. अब होता ये है कि for example अगर आप US की marketplace को देखें तो Amazon जो US में है वो उसमें जो बायर्स होंगे वो सिर्फ यूएस के होंगे, बट सेलर्स ग्लोबली हो सकते हैं। सो पाकिस्तानी सेलर Amazon यूएस मार्केटप्लेस से बेच सकता है, बट पाकिस्तानी बायर जो है वो यूएस मार्केटप्लेस से परचेज नहीं कर सकता। सो दिस इज समथिंग यू गाइस एवरीवन रियली नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली कवर कर सकूं कि किनके लिए क्या सूटेबल है, सो उसमें आई वुड से कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो कि बल्क प्रोडक्शन करते हैं और जो कि बल्क ऑर्डर चाहते हैं उनके लिए Alibaba.com सूटेबल है। जो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते और जो ऑर्डर बेसिस पे काम करना चाहते हैं, फिर वो हमारे सप्लायर्स और वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को हिट करना चाहते हैं उनके लिए Amazon है, जिसमें उनको अपनी इन्वेंट्री खुद बनानी पड़ेगी, उनको वेयर हाउस की कॉस्ट और ये सारी चीजें खुद बेयर करनी पड़ेंगी, शिप करनी पड़ेंगी। सो इट्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट, बट यू नीड टू डिसाइड कि आप डायरेक्टली कर कैसे। एंड सिमिलरली eBay का भी यही मॉडल है। सो ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है जिसमें मैं एक आखिरी स्लाइड पे बात करूंगा कि Amazon और Alibaba को हमने किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। अगर हम यूजर बेस को कंपेयर करें, सो Alibaba.com में 18 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं ऑन देयर सिंगल मार्केट प्लेस। Amazon पे टोटल सारी मार्केट प्लेसेस में 310 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं, एंड eBay पे सिंस इट्स ऑल कंज्यूमर ड्रिवन सो इसमें 154 मिलियन प्लस एक्टिव बायर्स हैं। अगर हम प्राइसिंग मॉडल पे बात करें, सो Alibaba.com की जो मेंबरशिप फीस है वो एनुअल है, वो एनुअल चार्ज करते हैं, और उसके बाद वो आपसे रेफरल फीस कोई नहीं लेते। मतलब अगर मैंने Alibaba.com पे अपना एक सेलर अकाउंट बना लिया है जिसकी मैंने एनुअल मेंबरशिप फीस दे दी है, सो मुझे उसके बाद मैं जितना भी बिजनेस करूं, मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊं वो सारा मेरा है। Alibaba उसमें कोई अपना परसेंटेज प्रॉफिट नहीं रखेगा। Amazon ऑन दी अदर हैंड एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भी आपसे लेता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे पर ऑर्डर रेफरल फीस भी लेता है। eBay on the other hand doesn't charge you to list your product, membership free है, but they also take referral fee like Amazon does. इन्वेंट्री मॉडल में अगर हम जाएं, सिंस मैंने आपको बताया कि Alibaba.com सिर्फ ग्लोबल बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, सो उनका दे डोंट केयर इफ यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म और ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप लॉजिस्टिक्स कैसे कर रहे हैं, आप फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, उनका टोटल जो मीडियम है वो कनेक्शन का है। they just want the global SMEs to connect to each other, so they don't hold inventory. Amazon ऑफर करता है आपको FBA मॉडल जो fulfillment by Amazon है, so it's a whole logistics plus warehousing plus everything, so Amazon offer you that at a cost. eBay भी ये सर्विस ऑफर नहीं करता। अगर हम पेमेंट सर्विसेज में जाएं जो हमारे सेलर्स से, वैसे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं सारे पेमेंट गेटवेज ऑफर करते हैं जो अगर बायर के लिए, लेकिन जो हमारे सेलर्स हैं उनके लिए थैंक्स टू Payoneer ये सारी तीनों मार्केट प्लेसेस पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि दे कैन बेसिकली विथड्रॉ देयर मनी थ्रू Payoneer, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया कि सारे कंपटीशन सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत कम्पिटिटिव हैं, सो सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑन प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिनमें आप कीवर्ड एडवर्टाइजिंग होती है, सर्च रैंकिंग होती है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, जो आई थिंक जो भी सेलर आता है उसको ये अपना एक सिग्निफिकेंट बजट इसके लिए एलोकेट करना चाहिए। Great. I think we'll be taking a screenshot of this because ये काफी अच्छे तरीके से summarize कर देता है इन सारी चीजों को compare करके एक अच्छी picture, consolidated picture present करता है। Small question that I had was कि Alibaba का when we talk about holding inventory, we know कि B2B है तो no order basis के ऊपर चलेगा। eBay का भी similar। FBA के ऊपर if you can just share a few words, just very briefly explain what FBA is, because a lot of buzz is around FBA. So for those who don't understand, most of them, I think from the chat box, I can tell they understand what it is.
but just for those who don't understand, what exactly is FBA? ठीक है, FBA इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी सेलर हूँ और मैंने 100 जैकेट्स की इन्वेंट्री बनाई है और वो मैं अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना चाहता हूँ। सो होता ये है कि अगर अमेजोन पे वो ऑर्डर आएगा आपके पास, सो वो अमेजोन जो है, जो इन्वेंट्री सेलर अकाउंट पे आपके या ऑनलाइन स्टोर पे जो शो कर रहा होगा, वो पाकिस्तान में आपके वेयर हाउस से शो नहीं कर रहा होगा। सो होता ये है कि आपने बेसिकली यहाँ से शिप करके अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाना होता है, और अमेजोन वहाँ पे आपकी सारी इन्वेंट्री मैनेज करता है। वहाँ से वो फर्दर जो कस्टमर को शिप होना होता है वो शिपमेंट देखता है। अगर वहां से रिफंड आता है या पैकेज वापस आता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है कंज्यूमर को हिट करने का, फ्रॉम योर डोर स्टेप टू देयर डोर स्टेप, ये पूरा अमेजोन देखता है। और इसकी एक अमेजोन फीस लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वेयर हाउस में अपने इन्वेंट्री होल्ड करवाते हैं तो उसकी आपको कॉस्ट देनी होती है, जो लॉजिस्टिक्स है उसकी आपको कॉस्ट देनी होती है, और इन्वेंट्री अगर आपकी ज्यादा दिन रुक रही है और सेल नहीं हो रही, तो उसकी भी एक कॉस्ट बहुत बढ़ती चली जाती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये आपको अमेजोन ऑफर करता है बाय देयर FBA मॉडल, और इसकी वो एक कॉस्ट लेता है। सो दिस इज बेसिकली एन एडिशनल सर्विस दैट दे ऑफर। Great. Acha, now keeping all of this in mind, the 3 different marketplaces that we have, my next question would be what our webinar's key topic is also. Yeah. What are the winning strategies to win globally? Globally, तो हमने देख लिया कि ये marketplaces हैं, but what are those winning strategies? ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। इसमें मैं सबको ये कहता हूँ कि यार सबसे पहले इफ यू आर गेटिंग इनटू ई कॉमर्स, जैक मा एक एनालॉजी यूज करता है आयरन ट्रायंगल की। इट्स बेसिकली योर ऑनलाइन स्टोर, चाहे वो आपका अपना हो, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, या फिर आप किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे जो आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया, दैट प्रेजेंस रियली मैटर्स। उस पे यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उस पे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी हुई हुई है, ब्रांडिंग कैसी हुई हुई है, आपकी फोटोग्राफी कैसी हुई हुई है, वीडियोग्राफी कैसी हुई हुई है। सो ऑनलाइन प्रेजेंस, पूरा जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है ऑन योर प्लेटफॉर्म, दैट रियली मैटर्स। अगर वो आपका चीज सही नहीं है, सो यू वोंट बी एबल टू बी सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर लॉजिस्टिक नेटवर्क, अगर आपकी डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही, अगर आपको जो प्रोडक्ट है वो फ्रेजाइल है और सही हालत में नहीं पहुंच रहा, सो दैट्स आल्सो वेरी की कंपोनेंट। सो योर लॉजिस्टिक्स नीड्स टू बी ऑफ टॉप नॉच, योर ऑनलाइन स्टोर नीड्स टू बी टॉप नॉच, एंड आल्सो योर फाइनेंस नेटवर्क। यू नीड टू ऑफर ऑल सॉर्ट ऑफ पेमेंट गेटवेज टू योर सेलर्स, ताकि उनकी कन्वीनियंस हो। एंड देन ऑब्वियसली इफ देयर रिफंड्स, तो आपको टाइमली रिफंड करने हैं, आपने अपने वेंडर को पे करना है तो टाइमली पेमेंट्स करनी है, सो दैट ओवरऑल जो आपका एक इकोसिस्टम बनता है बिटवीन ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस, वो ओवरऑल आपका एक सक्सेस का रीजन बनता है टुवर्ड्स योर ऑनलाइन सक्सेस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ये मैं आई रियली एम्फसाइज ऑन दीज थिंग्स कि we need to come up with solutions and not products. So अगर मैं बात यहाँ पे मेंशन करूँ, तो हम लोग अगर हम अभी जा भी रहे हैं ई कॉमर्स में या अमेजोन पे, हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोग दुनिया में ग्लोबली कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे, और वो हंट करके देखेंगे कि यार अच्छा इसकी डिमांड फॉर एग्जांपल इटली में है, और हम वो प्रोडक्ट वहां से हंट करके वहां से भिजवा देंगे। नो हार्म इन डूइंग दैट, बट अगर इफ माय पर्सनल फोकस इज, वो हमें काम करते रहना चाहिए, उसमें भी हम डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं वो, बट अगर हमने अपनी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बेहतर करना है, सो हमने अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हमें अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, रादर देन जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, वी रियली नीड टू सी कि यार वो कौन से सोल्यूशन है जो हम बेच सकते हैं। सो वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट एज वेल। हमने ग्लोबली ये देखना चाहिए कि ग्लोबली कौन सा सोल्यूशन है जो मैं पाकिस्तान में बैठ के इनोवेट या इन्वेंट कर सकता हूँ। उसके लिए यू डोंट नेसेसरीली नीड टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट देयर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, लाइक यू कैन add A and B to make C. So A plus B. So that's the idea. Right now मैं सिर्फ एक चीज ये जो चाहता हूँ हमारे सेलर बेस से, चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके they should think like they should address a solution. वो प्रोडक्ट रिलेटेड माइंडसेट में ना है कि बस हमें ऑर्डर आए और हम वो चीज बना दें। दे शुड बिल्ड देयर ब्रांड एंड दे शुड हैव अ स्टोरी अराउंड दैट एज वेल। एंड जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम लोग अभी भी बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट करना है, और डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए हमें कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट समझनी है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि एक बंदा आपको बल्क ऑर्डर देगा और वो बता देगा। और दूसरा ये भी हमें समझने की जरूरत है कि इसमें मार्जिन नहीं है। अगर हम यहाँ से किसी को यूएस बेच रहे हैं और वो यूएस में बंदा जो है वो पाकिस्तान से बना के अमेजोन यूएस में लिस्ट कर रहा है, सो हमें वो मिडिल मैन को हटाना है। सो हमें मिडिल मैन को हटाने के लिए हमने मार्केट समझनी है, हमने सोल्यूशन समझना है कि हमने कौन सा देना है, और हमने कंज्यूमर माइंडसेट समझना है। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू स्टिक टू अ नीश। अगर हम लोग देखें, होता ही है कि जब हम जाते हैं ना, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और दुनिया में हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं पैसे कमाने की, कुछ करने की। आपने हमेशा ये देखना है कि यार अपॉर्चुनिटी
plus your skill set. So हमेशा मैं कहता हूँ कि यार business is equals to opportunity plus your strength. अगर आप सिर्फ opportunity देखोगे और आपकी strength नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं होगे, और इसी तरीके से अगर आपकी strength होगी but opportunity नहीं होगी तो भी आप कामयाब नहीं होगे. But you need to have both of these things to be successful. अगर आप सिर्फ opportunity के पीछे भागते रहोगे, so और आपके अंदर कोई ऐसी strength नहीं होगी जिसकी वजह से आप उस opportunity को बेहतर तरीके से capitalize करोगे, तो आप you won't be successful. So you have to pick a niche. यार ये वो industry है. Obviously अगर आप अपैरल में है तो आप अपैरल के अंदर बहुत सी चीजें जो कर सकते हैं, बट यू नो पिक अ नीश एंड बिकम अ डोमेन एक्सपर्ट ऑन दैट. एंड एज आई मेंशन्ड बिफोर, यू नीड टू कीप द प्रोडक्ट क्वालिटी एट द फोरफ्रंट. आप कभी भी प्रोडक्ट क्वालिटी, आप सारी वाली ऊपर वाली चीजें कर लें और आपका प्रोडक्ट आखिर में अच्छा नहीं है, सो यू वोंट लैंड एनीवेयर. एंड सर्विस डिलीवरी, मैं हमेशा कहता हूँ भाई अपनी सर्विस डिलीवरी पे फोकस करें. पीपल हैव सर्विस कंजम्पशन माइंडसेट. दे वांट टू कंज्यूम सर्विस एंड यू शुड बी द वन गिविंग देम सर्विस व्हाटएवर दे नीड. एंड once you give the right sort of service, people will pay premium to you. फिर आपको वो जो है ना, वो आपको प्राइस कंपेटिटिव होने की जरूरत भी नहीं रहेगी. पीपल विल पे यू द अमाउंट यू आस्क. एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. शॉर्ट टर्म ना देखें, शॉर्ट टर्म गेम्स को ना देखें, लॉन्ग टर्म गेम्स को देखें, ग्रेटर गुड को देखें. दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट फ्यू थिंग्स, सोशल मीडिया इज रियली इंपॉर्टेंट. मैं आपको बताऊं, अभी भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं यार हमने अमेजोन और अलीबाबा से इतना नहीं कमाया जितना हमने सोशल मीडिया लीड्स के थ्रू कमा लिया. सो योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलप योर डिजिटल एसेट्स. अपने डिजिटल एसेट्स को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बनाएं, और एक ग्लोबल आउटलुक दें. जितना ज्यादा आप उनको ग्लोबल आउटलुक दे सकते हैं, सो सोशल मीडिया विल कम इन रियली हैंडी. एंड देन लास्टली, दिस इज वैलिड फॉर एवरीवन. मैं अपनी टीम्स को भी ये कहता हूँ और मैं अपने सेलर्स को भी ये कहूंगा कि be open to feedback, have the humility to listen to feedback, take feedback very often, listen to your customer needs. They will tell you what's actually needed, not true. So that's really important. And once you take feedback, you'll obviously keep evolving. So have that, evolving mindset, keep changing, keep growing, and have that growth mindset that you have a continuous learning pathway pe ho. So yeah, I think that's about it. No, I think that's great. All the advice and all the strategies that you have, the tips that you have shared, I think they're spot on. From the discussion that you started with, they kind of address all the negatives that you highlighted. So I think they're all spot on. We are going to jump on to questions now. So I see a lot of raised hands. If you can just put it in the Q&A box, कि आपका क्या question है. I've tried putting it on the chat box. But the way we operate is कि आप Q&A box के अंदर अपना question डाल दें, तो definitely we will try to address it. And अगर Payoneer related query है तो kindly उसको community के ऊपर address कर दें, and I'll approve your post. And if someone from the team has to jump in, we will definitely jump in. So दो तीन चीजें हैं, उनको अगर हम लोग sort out कर लें, life will be easier for everyone. So just jumping on the questions. So Mubashir had a question: how can we sell on Etsy? Is this a platform that has high potential? How can we sell on Etsy? Etsy. By the way, Etsy तो I would strongly recommend Etsy के लिए. Etsy क्योंकि हमारा artisanal work काफी famous है. So I personally don't have expertise in terms of the platform, but I really believe that Etsy would be a very good opportunity for Pakistani sellers, क्योंकि handicraft का जितना भी काम है वो उधर ही अच्छा हो रहा है. और and you will जो हो ये रहा है ना, unfortunately यहाँ भी ये हो रहा है कि middleman है. So आपको middleman को eliminate करना है. And I'm not sure if Etsy offers a model as such as FBA. So वो nitty-gritty कैसे solve करना है वो मसला है. But apart from that, अगर आपने Etsy पे बेचना है, so you can register an entity in the US. We can also get you guys done that. So US में आप entity register करके अपना account खोल के Etsy में बेच सकते हैं. आपने सिर्फ logistics sort out करनी है अपने account opening की. That I am not really confident about right now. But I strongly believe कि अगर आपका कोई आर्टिसनल प्रोडक्ट है, स्पेशली जिनमें हमें बहुत सी चीजें जो हम बेच सकते हैं पाकिस्तान से, मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरह के इलाकों में, पेशावर, इस तरह के इलाकों में इतनी चीजें बन रही है जो हम Etsy पे बेच सकते हैं. So Etsy is definitely a platform for Pakistani artisans. Great. Someone is okay. A lot of comments around Etsy are coming कि वो पाकिस्तानी sellers को आने नहीं दे रहे हैं. So as I think Talha has mentioned, you might want to थोड़ा सा not show your Pakistani so much. You're breaking up. Can you hear me now? Am I clear now? Hello. Hello. Can you hear me? Let me know if all of you can hear me or not. Can you all hear me now? Okay, I think Talha, it's yours. The rest of them can hear me. Okay, great.
I think it's Hello. Talha. Yeah, can you hear us now? Okay, I think we have a slight technical issue. We can hear. Oh, okay, I think he'll just join in again. Talha, can you hear us now? Yeah, I can hear you. I think there was some internet trouble at my Yeah, there end. was some internet issue. Okay, great. So Etsy के ऊपर थोड़ी सी request वगैरह आ रही हैं, comments हैं कि they're not allowing the Pakistani sellers. So then I Sellers? think Talha has Acha, mentioned I'm not really confident about Etsy. I just know Etsy as a platform. Acha, so I have my team here as well in the panel, yeah. Junaid and Shihab. They're the actual team members who make it happen. मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ. So if these guys have any reply to these questions, they can step in and answer these questions. Great, and I think वो already answer भी कर रहे हैं साथ साथ इसको. ठीक है. Acha, Hanif ka hai, how to start on Amazon being a seller from Pakistan. I want a solution for shipping my products over. So Hanif, I think that's a very wide question. Starting कहाँ से करनी है, क्या कुछ करनी है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको personally भी research करनी पड़ेगी. You will have to see if you want to do it from Pakistan. Do you want to incorporate an entity outside Pakistan? In either case, Payoneer will help you with the payments. But उसके अंदर थोड़ी सी आपको research करनी पड़ेगी. बाकी I think Talha can share a little bit on that as well. Okay. So Junaid is the general manager after sales, and he looks after Amazon and Alibaba. So I want if he can step in. Junaid, can you hear me? हाँ जी I can hear you. हाँ जुनेद, इनका जो सवाल था अगर आप उस पर कुछ बता दो और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उस हवाले से भी बता दो. Can you please repeat the question? जी हनीफ मुसव्वर का है, how to start on Amazon being a seller from Pakistan. I want a solution for shipping my products over. So I think इनका logistics का थोड़ा सा issue ज़्यादा है. ओके परफेक्ट. ओके सो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कौन सा बिजनेस मॉडल उसको यूज़ कर रहे हैं. या तो आप FBA को मॉडल को यूज़ करना चाह रहे हैं. अगर आप लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं तो आप FBA के मॉडल को यूज़ करें. आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयरहाउस में भेजें और वो अमेजोन ही उसको आगे से आपको शिप करेगा. तो आई गेस अगर आपके शिपिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो ये सबसे उसमें परफेक्ट मॉडल है उसको अमेजोन के अंदर. ओके ग्रेट. अच्छा okay, Samad Afridi's question I will not be. Okay, how to deposit money in Payoneer account? अगर आपका business चल रहा है तो business आपका amount Payoneer में आएगी और Payoneer के through फिर आप बैंक में लेके आ सकते हो. Then we have a question from Farhana Dahar. She is saying, I'm working for an e-commerce website named easytobuy.pk. I want to know how I can get attention of buyers. I'm trying for 1 year. फरहाना, इज दिस द क्रॉस बॉर्डर या मार्केट प्लेसेस के ऊपर? क्योंकि जो अभी हम सेलिंग की ज्यादातर बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट एज सच नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट प्लेसेस की बात कर रहे हैं. सो अगर इफ यू आर प्लानिंग कि इसको मार्केट प्लेस पे शिफ्ट करना है देन डू टॉक अबाउट इट. Another question that we have from Hanif is, in case of drop shipping, I would need a fulfillment partner only for US, right? जुनेद, अगर आप यहाँ क्वेश्चन ले लो. जुनेद, कैन यू हियर मी? हाँ जी ओके. सो इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर सेल करना चाहते हैं. अमेजोन के अंदर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस हैं वो हैं US और UK. अगर आप UK की मार्केट प्लेस के अंदर सेल करना चाहते हैं तो आपके पास UK के ही डॉक्यूमेंटेशन होंगे और आप UK की मार्केट प्लेस के अंदर सेल कर सकते हैं और उसी के वेयर हाउस में भेज सकते हैं. और अगर आप US के अंदर सेल करना चाहते हैं तो आपके पास US के ही डॉक्यूमेंट्स होंगे और US के अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर आप भेज सकते हैं. और आपने एंटिटी भी वहीं रजिस्टर करनी होगी. हाँ बिल्कुल, आपको उसी मार्केट प्लेस के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए. Acha, there are two questions that I am going to take. One is from Malik Shamir. He's saying, what would you prefer, a private label or wholesale? And connected to that, someone asked, what is the minimum investment required for selling on Alibaba? So I think थोड़े अगर दोनों को इकट्ठे ले से private label or wholesale तो will be for Amazon, and for Alibaba मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, अमेजोन होलसेल और प्राइवेट लेबल. तो प्राइवेट लेबल इज समथिंग कि आपके पास उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. और होलसेल का मॉडल ये है कि उसके लिए आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती. आपको अपनी ब्रांडिंग के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, तो आप इजीली सेल कर सकते हैं. उसके ऊपर इतना बजट नहीं चाहिए होता. लेकिन अगर आप सिर्फ PL के ऊपर आते हैं तो उसके लिए आपको बजट अच्छा खासा चाहिए होता है.
ग्रेट. सो प्राइवेट लेबल एक तो बजट और दूसरा आई थिंक उसके अंदर काम भी थोड़ा सा ज्यादा और Yes, टाइम exactly. भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि यू हैव टू बिल्ड अ लेबल ऑल टुगेदर. वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. यस. सो अगर पेशेंस है तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंस के साथ यू बिल्ड दैट अप. अच्छा, एज फार एज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन अलीबाबा वी नीड, सो आई थिंक यू Okay. गाइस एक्सप्लेन बेटर. ओके ओके. सो अलीबाबा के अकाउंट के लिए आपके पास जो मेंबरशिप के लिए होते हैं वो सबसे पहले आपकी एक मेंबरशिप फीस होती है और उसकी जो कॉस्ट अगर आप PKR के अंदर देखें तो वो ऑलमोस्ट 1300 या $1399 होती है. सो अराउंड 2,50,000 इतना आपके पास मिनिमम बजट होना चाहिए आपको मेंबरशिप परचेज करने के लिए. जैसे मेंबरशिप के चार्जेस हैं अलीबाबा के ऊपर ऑन बोर्ड होने के लिए. उसके बाद अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपके पास वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर आ रहा है. ठीक है. और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप 50% हमें एडवांस सेंड करें, हम आप उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्शन बेच सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप बाकी चार्जेस मंगवा सकते हैं. तो जो मिनिमम चार्जेस आपको अलीबाबा के अकाउंट के बनाने के लिए होते हैं वो आपको अराउंड 2,50,000 आप होते हैं. Okay, great. Samad is asking about different payment options ka comparison. So Samad, I have answered the question as well. But apart from that, from an Amazon perspective, Payoneer का एक बहुत बड़ा advantage है that we're the only out of the options that you have mentioned, we're the only ones who are the Amazon approved payment provider. So उसकी वजह से काफी आपको फायदा हो जाता है. दूसरी बात है we're present in Pakistan. So since we're present in Pakistan, we're able to give you a bit of a local support as well. तीसरी बात यह है कि पेनियर का आपको कंपनी अकाउंट मिल जाता है विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द बिजनेसेस. तो आपके वो जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफी सॉर्ट आउट हो जाती हैं. उसके अलावा अगेन द फी स्ट्रक्चर्स आर वेरी अट्रैक्टिव विद पेनियर. So I would suggest if you drop me a message on Facebook or drop us a line on our Payoneer Pakistan official group, we can have the discussion in depth and we can take this forward from there, and I'll give you we can share the in-depth analysis that we have done on our part. We can share it with you as well. So that will help you. उसके अलावा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे एडसी से रिलेटेड कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि एडसी के ऊपर पाकिस्तानी सेलर्स को ऑन बोर्ड नहीं होने. तो अभी रिसेंटली ही मैंने भी अपना अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट किया. उसके लिए आपके पास एक तो अगर आप US के अंदर कह रहे हैं या UK के अंदर कह रहे हैं तो वही ऑब्वियसली बात है उसी मार्केट प्लेस के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. दूसरे आप पाकिस्तानी IP के ऊपर आप एडसी के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है. पाकिस्तान के अंदर से आप एडसी के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते. तो उसके लिए आपको ये होता है कि आप VPS को यूज़ करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. Okay, Hanif is also asking कि Payoneer company account for Pakistani businesses कैसे बन सकता है. So number one is just go on payoneer.com and there's an option. आपसे वो पूछता है कि आपने individual account बनाना है या company account बनाना है. Company account में थोड़े बहुत verification documents चाहिए होते हैं, such as your business details, business incorporation details, आपकी business website setup proper होनी चाहिए, not an Instagram page, but like a proper, if you're doing a business and selling, you should have a website. आपके जो भी digital assets हैं, we should be sharing that. Further, I would suggest कि अगर आप अपनी थोड़ी सी company details हमें दे दें और let us know a little bit about your monthly volume. Whoever has this request of company account from Payoneer, please share a little bit about your monthly volume, your business details. बेशक आप Facebook message कर लें and we will definitely look into it and we'll try helping you out with it. Otherwise, a very simple method is go to payoneer.com and you can just sign up. और sign up process में अगर आपको कहीं मसला पड़ता है then always reach out to us and we'll help you out on that, because one of the biggest advantages that we have over other options that you mentioned is that they do not have a local team. We are here to support you and we're here to make it easy for you. So you can always reach out to us. That should not be an issue. I think with that, we have hit the 6 p.m. mark. So I think with that, हम तलहा को भी free कर देते हैं. The questions are very, very interesting. All questions अगर हैं from this webinar, this recording is going to be on Payoneer Pakistan official group. आप उसके comment section में भी जाके questions अपने ये जो यहाँ पे हैं जो कि आपको feel होते हैं answer नहीं हुए, आप उनको drop कर लें. We'll have either Talha or someone from his team look into those questions and we'll definitely try answering it on our community. Again, it's on Facebook. Just join it, Payoneer Pakistan official. Join over there and it should we will look into your questions. And with that, I'm going to thank Talha for his time and the Talha's team as well, Shahab and Junaid, for joining us. Thank you so much. I think it was very insightful. We learned a lot and we hope to probably do a 2.0 of this very, very soon.
Thank you so much. Thank you for Thank you having so me. much for having us. One last thing, I saw a few questions regarding hiring, so I just wanted to mention that we are aggressively hiring. And if you want to help SMEs sell online, send us your CVs at careers@trademore.com. Great, thank you. So And yeah, with that, thank you, Nida. Thank Sorry. you, thank you. And with that, I'm going to also pitch कि हम लोग Payoneer Forum कर रहे हैं 30th November. So all the sellers and freelancers and service providers who have joined in today and who are watching probably later on in the group as well, please do join us. It will be in Lahore. So if you're in Lahore on 30th November, do join us. It will be at PC. And if you're outside Lahore, you can join us virtually as well. Uske registration links are up. So I'll share it on the community. Please come. It is going to be a great chance for networking. We will have TradeMore there as well. So great chance for networking. And great chance for learning more from panel discussions as well. So hope to see you all. Okay, great. Thank you so Thank you, much. Nida. Thank you for having us. Allah Hafiz.